those things you have to remember properly, and you have to remember properly the most important thing in that area. So what is that? Now basically what your the definition of factory, worker and manufacturing process, right? Apart from this, we have discussed the inspecting staff. Inspecting staff, it related to inspector, chapter 2. Okay, section 8, 9 and 10, it related to inspector, power of the inspector and certifying surgeon. Inspector and certifying surgeon appointed by the state government, respective state government, because in basically the factory that controlled by state government, that the central government, that much of interference, that not means the central government interference, it not there related to the factory. Clear? Now today we will discuss the chapter 3, that is health facility. Clearly subha jauchi na pila mane? Yes na? अरे हाँ पूरा clearly subha jauchi? Yes, okay, chalo. Okay, let's start. I will share this slide. ठीक है? Wait a moment. Okay. Acha, is it visible? Is it visible to you? Slide visible to you? Yes. Okay, 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 okay. Chalo. ठीक है? So Factory Act 1948 already we have discussed. It is already I told you it is total number of chapter 11 and total number of section it is 120. ठीक है? So chapter 1 already we have completed, chapter 2 already we have completed, and today first we will discuss the chapter 3. ठीक है? Now chapter 3 it related it related to safety facility. Chapter 5 it related to welfare facility. Chapter 3 it related to health facility. It related to section 11 to section 20. So tome sethi kono mention karibo? Health facility, chapter 3, section 11 to section 20. What it relates to? Kona bhitere achi? You can see this slide here. ठीक है? It related to the section 11, section 8, section 9, section 10. It is there in the chapter 2. Okay? Chapter 3. Now discuss the section 11. That is the first one is the cleanliness. Now what do you mean by cleanliness? See, my dear students, cleanliness means आमे कौन करूचे? आमो घर को daily सकाळु clean करूचे. केमिति? ना through sweeping and mopping. झाड़ू मारिके और पोछा मारिके. Likewise, factory is like as our home. ठीक है? So every factory, every day, it means on daily basis, they have to clean their the floor, staircase, corridor, and other area to proper sweeping and mopping, so that the factory it can be maintained clean and hygienic environment, right? That is the cleanliness. मने रखी दबो घर जहा फैक्ट्री से घरे जेमिति करूचे फैक्ट्री रे सेमिति करूचे, right? Then असला कोन second point, disposal of waste and effluents. What do you mean by this? After sweeping and mopping ए देखु थबो देखो पानी आगो केमते डिस्पोज होची प्रॉपर एरिया रे हैला देखो फर्स्ट स्लाइड टा केमती हमरो स्वीपिंग मोपिंग करा जाउची फैक्ट्री रे आ कोन ताको हमें कपड़ा धरि के पोछिबा पोछा मारिबा नॉट पॉसिबल सो सेठी बड़ बड़ मशीनरी रखा जाईची जोटा के स्वीपिंग और मोपिंग करिया पय चटाचट क्लीन करिबा पय हैला सेकंड और थर्ड देखो हमरो डिस्पोजल वेस्ट एंड इफ्लुएंस केमती करा जाउची राइट हमरो हमें फॉर एग्जांपल हमें कहबा डिस्पोजल वेस्ट एंड इफ्लुएंस
प्रति एरिया रे हमर भुवनेश्वर रे प्रति एरिया रे हमर म्युनिसिपालिटी डस्टबिन देछि राइट ये तमरा कोन कहलो ग्रीन कलर डस्टबिन ब्लू कलर रेड कलर कोन ना गोटे जगह तमे वेट थिंग्स डंप करिवो अगो जगह ड्राई थिंग्स डंप करिवो सो सेमिति एठी कोन होची ना disposal of wasted effluents means those are the unnecessary things after sweeping or mopping or in the manufacturing process those are the unnecessary things are there effective arrangement have to be met in every factory for the treatment of waste and influence due to the manufacturing process or it may be after sweeping or mopping those are the unnecessary things are there over the factory we have to dump in a one area बुझिल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रो जोटा हमर अननेसेसरी थिंग्स बाची आमे एपटे सेपटे फपाड़ीबा नाही गोटे जगह रे आमे ताको डंप करिबा right so that is a disposal of waste and effluents then after ventilation and temperature now ventilation and temperature means what that related to section 13 देखो सीरियली अछि दया करी सीरियली मने रखिबो 11 12 13 14 15 16 सीरियली रखा है तळगु करिके मन रखि दबो हैला then कोन ventilation and temperature what do you mean by this if every factory it must be every factory effective and suitable provision should be there in every factory for securing and maintaining adequate ventilation by circulation of fresh air it means what plenty of door window facility the factory have to provide so that the circulation of fresh air it can be possible right and the factory have to maintain a reasonable temperature at every workroom माने धर गरम होची आमे तांको कूलिंग फैसिलिटी दबा केते प्रकार कूलिंग फैसिलिटी रहिबो सो रिजनेबल टेम्परेचर वी हैव टू मेंटेन इन एवरी वर्करूम and every factory they have to provide plenty of means what the windows doors so that the fresh air it can be circulation over the factory and the worker they can feel very fresh and they can feel motivated to work right then dust and fumes dust mane kona dhuli fume means kona dhua hela so dust and fume means what see again every factory have to provide effective and suitable provision so that the dust fumes and other impurity things it can be removed properly it means we have to provide the exhaust appliances in the necessary area the exhausted fan ame lagauche hela और आमे बहुत सारा माने विंडोज डोर्स रखिले एक्सॉस्टेड फैन देले so that what will happen so it will be the all the impurity things the dust fumes it must be removed properly inside the factory right and we have to maintain fresh and clean and hygienic environment that is the dust and fume section 14 artificial humidification means artificial humidification natural humidification see हमको नेचुरली गरम लागुची समर सीजन नेचुरली गरम आमे फील करछे बहुत ह्यूमिडिटी अछि आज एनवायरनमेंट पर विरक्त लागुची आमे एमती कहूचे बट दोस पर्सन्स आर वर्किंग देखो एठी तुम काम करिवो हैला किते बड़ बड़ मशीन लागिची देखो सो ए सब एरिया रे जदी द वर्कर्स विल वर्क इन दिस पर्टिकुलर एरिया in front of the big machinery hot machinery in front of the fire in front of the basically in this particular area so what will happen automatically humidification artificial humidification the worker will face the artificial humidification so what is the responsibility of the factory every factory they have to provide proper ventilation facility cooling facility so that the fresh air cooling facility means air condition kind of things or fan or different exhaust area apart from this proper ventilation facility so that the worker can work in that particular area in comfortable way right so that is the artificial humidification while we are working ame kitchen रे जतले बहुत टाइम काम करछ हम कोन लागुची बहुत गरम होची
बट किचन अपेक्षा जदि हम अदर एरिया को आसीबा रूम को आसीबा सेटा टेम्परेचर बहुत कम थाए बट किचन रे टेम्परेचर टा हमर बहुत हाई थाए कारण सेठी हम कोन करछे गैस थाए हमर different हमर मींस व्हाट हॉट जिंस थाए सो as like as factory रे those people are working nearest the fire nearest the hot machinery so we have to maintain proper cooling facility so the artificial humidification should not be there clear बुझी गला देन आसला कोन ओवर क्राउडिंग क्राउड माने कोन क्राउड माने भीड़ देखो एटा देखो ए स्लाइड ता देखो आ बड़ होनी हैला देखिलो ना केते भीड़ अछि ए जगह तुमे काम करि परिबो निश्वास नै परिबोनी काम करबा तो दूर रकत हां एठी तुमे निश्वास नबारे भी तुम प्रॉब्लम हो एमती फैक्ट्री काम हबो नॉट पॉसिबल सो हमें कोन करबा ना Factory Act 1940 said every factory they have to means one worker to other worker the minimum space must be mane rakhibo ita every factory they have to provide the means what one worker to other worker the minimum space must be 14.2 cubic meter means टमाटो मो भितरे गैप केते रहिला 14.2 cubic meter so that the we can control the overcrowding को कंट्रोल करिबा पई गोटे वर्कमैन टू आ गोटे वर्कमैन रो गैप मस्ट बी 14.2 cubic meter so that we can control the overcrowding दस्ता दस्ती हां भिडो ए सब को हमें अवॉइड करि परिबा got my point then असला कोन ना lighting कोन ना lighting means the every factory they have to provide the those are the interior place people are working interior place where the sunlight facilities may not be there so in that interior place we have to provide plenty of artificial lighting facility so that the worker they can work in that particular area properly but those are the open area so we have to provide the skylight and we have to clean the skylight window so that the natural light the sunlight it get enter over the factory right आमे कोन करिबा हमर ऊपर असना हेगी थिबो कोन कहलो स्काईलाइट थिबो कि हमर विंडो थिबो सो हमर सनलाइट आसी परिबो देखा जीवनी तो हमें से सब को पूरा क्लीन हाइजीन मेंटेन करिबा clean rakhiba so that the natural light it can enter over the factory and the worker also can work properly right so the artificial light as well as the natural sunlight the factory have to provide that much of provision so that के रे मा जोटा कि खटखट होची जे करिचे टिके म्यूट कर देलो ठीक है सो कोन हबो ना आमे लाइटिंग को प्रॉपर आमे फैक्ट्री रे दबा इनर सरफेस outer surface both area so every area skylight window door we have to maintain proper clean so that the natural light and suitable artificial light it can be should be there over the factory clear now asla drinking water piba pani hela suno every factory have to provide plenty of drinking water facility to the means plenty of drinking water facility they have to provide towards their worker right ame piba pani rakhiba badhya compulsory but if in a factory more than 250 workers are working 250 रु अधिक वर्कर जदी काम करूचंती गोटे फैक्ट्री रे ठीक है so the factory have to provide cooling drinking water facility क्यों कौन कहली मन रखुतबो एडी चाटा से लिखि दउतबो हैला कौन कहली ना जदी आमो फैक्ट्री रे plenty of drinking water facility we have to provide to the worker as we know that but more than 250 workers 250 रो अधिक वर्कर जदी काम करचंती so we have to provide the cooling drinking water facility and the nearest the cooling drinking water facility open drain nearest 6 meter जोटी हमें कूलिंग ड्रिंकिंग वाटर टा इंस्टॉल करिचे नियरेस्ट 6 meter open drain latrine
urinals, all those means things should not be there. Every day, the cooling drinking water area, we have to maintain clean and hygiene. Clear? That is the drinking water. Mane rakhibo. Hela? Then asla latrine and urinals. Latrine and urinals, it related to section 19. What do you mean by this? Every factory, they have to provide proper latrine and urinal. Means what? Plenty of latrine and urinal facility separate for male and female worker. And they have to mention in front of the latrine and urinals, this is for male and this is for female. देखुथबो male female रो चित्र दिया जायते और हमर regional language रे लिखा जायता particularly जे माने कोन कहिलो male female और regional language रे सेट मेंशन करबा को compulsory, right? So every factory they have to provide plenty of what latrine and urinal facility. But if more than 250 workers are working in a factory, so we have to provide sanitary type latrine and urinal facility. It means what? Sanitary based latrine and urinal kono? Na sanitary based latrine and urinal means each and every moment it must be clean. It must be clean through different detergent like detergent, lime, and other Dettol. Other things must be used and must be cleaned at time to time. So that is a sanitary types, sanitary based latrine and urinal facility. Right? Then after we will go to the last section of the Factory Act in the health facility, that is the spitons. Spit माने कौन? थुक्कीबा. हेला धरो वर्कर माने कौन करिवे ना किछि जिंस नै कि पूरे तळो ऊपर को स्टेयरकेस रे देन हला कॉरिडोर फ्लोर रे एबदी जिबे जिंस नै नि का ऊपर को जिबे मैन्युफैक्चरिंग एरिया रो अदर एरिया को जिबे मूव करिवे. सो कौन करिवे? गुटखा खाइबे, पान खाइबे, सब खाइबे, एटी सेटी थुक्कीबे. हेला तुमे जेते भी क्लीन मेंटेन करले भी से फैक्ट्री क्लीन हे परिबो नाही. So it कौन कहा गला? To maintain the factory clean and hygiene, every factory they have to provide sufficient spiton facility in the convenient place, and the spiton facility, the area also, it must be maintained clean and hygiene condition, right? So that no person, no worker, they will spit within the premises of a factory. केही भी premises भितरे factory तमे थुकी पारिबो नाही. You may chewing the gutka, pan, all those things, but you cannot spit inside the premises. The suitable provision should provide the factory so that the worker will spit in that particular area, right? And apart from this, that spit area, the थुकुथुबा से entire area टा प्रश्न आइबो कि माने ये लागिबो भाबिलो चिंता कला छी. So हमें कोन करिबा ताको सब बेले क्लीन एंड हाइजीन मेंटेन करूथबा. अच्छा एतिके कला परे भी तमे कोन कलो फिर भी थुकिलो. मनीष तो प्रकृति चलला आलू तो से थुकिबोगा लिफ्ट रे माने ये रे देखिबो सब बहुत जगह रे गला आलू सीढ़ी रे ये रे सब ठाकुरंक सब माने कॉर्नर मान करे सब ठाकुरंकर फोटो रखि देथिबे. किछि किछिटा बडा सुंदर सा सीनियर रखि दे काहेकि ना से दया करी लिखिथिबे डोंट स्पीट. फिर भी कौन करथिबे लोक सेट जाय कि माने ठाकुरंक फोटो को टिके दया करी के थुकी नथिबे किंतु फिर भी बाय चांस एमति थुकी दोथिबे. सो ए सब को कंट्रोल करबा पे कोन करा जिबा दरकार ना फैक्ट्री एक्ट 1948 कहला for the punishable if you will spit inside the factory other than the spitting area, so for the punishment basis you have to give 5 rupees fine. केते टंका? 5 टंका फाइन दो. तमे कहबो मु थुकिली बोली से केमति जानला? चारियाडे कैमरा लागि छै. आज का डेट रे आगुर तो कैमरा नथिला हमर. आगुर केम जाना पड़थुला ना जो एरिया रे थुका हैची से एरिया रे जो लोक काम करचंती तो फाइन दियो समस्त को पका.
तो ऑटोमेटिकली जना पड़ जो किए से थुकी मु थुकिनी तुम्हें थुकीच तो मु डेफिनेटली कहि मु काई फाइन देबी से फाइन दो कारण दीदी थुकीची बुझिलो ना बट आज एना डेट रे कोन होची एना डेट रे वो डोरटा बंद कर देला से बोच फालतू का सो एना आज का डेट रे कोन होची आज का डेट रे सेटे कैमरा लागिची तुम जदी स्पीड करी ऑटोमेटिकली सेटा कैमरा रे जना पड़ जीवो so my dear students you should remember अच्छा मते कुहो इना तो मते तो जानी पानी मते इना कुहो तुम माने बुझिलो ना बुझिलोनी yes or no मैम the slide not visible clearly अरे स्लाइड देखा जाउ नथुला पिला माने yes okay very good सब बुझी गलो very good अच्छा okay okay thank you so much fine चलो कौन ना हमें हाँ so what will happen किए गुटे खटखट ठक ठक होची म्यूट कर देला रे मां हैला so provision related to health you have to remember section 11 to section 20 it related to provision related to health facility so आकु सुनो कौन कहि दोची सुंदर भाबरे सुनि दियो तमे जदी एइथिरे कौन कहिलो एग्जाम टाइम रे 11 12 13 14 करके मने रखी पारलनी किछि टेंशन ना किछि प्रॉब्लम ना कौन करिवो धर क्लीनलीनेस पर डिस्पोजल मने पड़लानी कौन लिखिला ओवर क्राउडिंग लिखि देल तापरे मने पड़ला डिस्पोजल किछि प्रॉब्लम ना सेठी कौन करिवो ना ऊपर कौन करिवो चैप्टर 3 प्रोविजन रिलेटिंग टू रिगार्डिंग टू हेल्थ फैसिलिटी से ऊपर लिखि दबो सेक्शन 11 टू सेक्शन 20 ऊपर मेंशन कर दबो देन तापरे बट सेक्शन 11 टू सेक्शन 20 एति की तुमको जिंस मन रखिया पड़े एति की स्टेप हैला एंड अपार्ट फ्रॉम दिस तुमे कौन करिवो जदि सीरियली मन रखिलो दैट इज वेरी वेल एंड गुड जदि मन रखि पाला फिर भी चलिबो बट पॉइंट टाको सब आगे मन रख इजी पॉइंट अछि किछि डिफिकल्ट ना ठीक है नेक्स्ट वी विल गो टू द प्रोविजन चैप्टर 4 प्रोविजन रिगार्डिंग सेफ्टी हैला कौन कौन आछि से सेफ्टी फैसिलिटी चैप्टर 4 रिगार्डिंग सेफ्टी फैसिलिटी इट रिलेटेड टू सेक्शन 21 टू सेक्शन 41 क्लियर सेठी हमें केते सेक्शन रे फिनिश कले सेक्शन 20 रे फिनिश कले सेफ्टी केते रो स्टार्ट हैला सेक्शन 21 टू सेक्शन 41 so section 21 under the safety facility section first section is the section 21 that is fencing of machinery now what do you mean by fencing of machinery see my dear students already your important definition already I told you prime mover transmission machinery so many things already we have stated. So fencing machinery means those are the prime mover and the transmission. Prime mover means what? Prime mover means it related to the any motor, any generator, any means what? Things that or it's the transmission machinery, every dangerous part, it have to fence properly. माने कौन कहला? माने ताको properly installation हेतिबा दरकार. or it may be the motor, it may be the generator, it may be the all the transmission machinery part, or other machineries that must be fenced properly, so that all the persons, those people are working nearest that machinery, they will not face any kind of problem or any kind of danger. That is not bolt. Yes, sabu ko ame time to time check kariba darkar. Right? That is the fencing machinery. Work near machinery motion. Motion माने कोना? Motion माने है move करूथिबो. Moving condition रहथिबो. हैला? So एठी कोन कोहा जाउची? Those machineries are there in a moving condition, motion condition. The expert, they have to examine the machinery time to time, whether the machinery it is there in a proper condition or not. First thing. Second thing, those machineries are there in a moving condition. The trained adult worker, proper wearing means tight fitting clothing. The adult worker must be wear the tight fitting clothing, and the worker must be what?
पूरा साड़ी पिंदी थिबा ओमेन कोन करथियो पूरा साड़ी पिंदी थिबो जाई से मूव करी के से मशीन साड़ी से भीतर सब पसी जाई बुझिलो ना सो ओमेन young person child all the persons are not allowed nearest the machine those are in a moving condition only the adult person the person can be allowed in that particular area clear employment of young person and dangerous by this those are the young person हमें कहा को कहले definition रे either child or adolescent से कहते definition आगो सुंदर भाबरे मन रख young person means either child or adolescent child किए जे 15 वर्ष फिनिश करनी adolescent किए जे 18 वर्ष फिनिश करनी त माने अल्टीमेटली चाइल्ड हो कि adolescent हो जे कि 18 इयर्स फिनिश करनी हला कंप्लीट हेनी सो एमानु को हमें को किए कहले young person so employment of young person near dangerous machinery the dangerous machinery the young persons are not allowed in that particular area simple clear striking gear for cutting of power कौन लिखिला ना मशीन गला अच्छा सेक्शन 23 गला 24 striking gear and device for cutting of power आ माने कौन आम घरे मेन स्विच अछि हमर मेन स्विच अछि धर फ्लैट मान करे पूरा मेन स्विच अछि तले हैला फिर भी आमर समस्तंकर घरे माने फ्रंट रे गोटे गोटे आमर सब दिया हिची कोन कहलो मेन स्विच टाइप रो पावर कट हबा पई धर किछि भी जिंस आमर धर हावेल्स रे ना सब जिंस रो सब लागि छि सो ऑटोमेटिकली तम घरे किछि भी डेंजर हैला सो ऑटोमेटिकली से कोन करबो पावर कट कर दे ऑटोमेटिकली से कटि छि स्टिल जदि भी न कटिला तमे चटाचट जाई कि सेठी तमे तार स्विच को ऑफ कर दो बाकी तमे जदि फोर्थ फ्लोर रे रहुचो तम घरे किछि प्रॉब्लम हैला तम घरे दिया जायनी पावर कट हबा पई तमे कोन करिवो तळु गु जीवो से तमको तो से एरिया रे चाबी दिया जाय नथिबा तळु गु जीवो जाय कि कहिवो पावर कट हलालु घर पूरा ध्वंस होई जायतिबो जळी बुझिलो ना सो कोन हबो नले का गुटे शॉर्ट सर्किट होची नले शॉक नहीं होची सो सी कोन कहिला ना एवरी फैक्ट्री suitable striking gear they have to provide and the other if means what the appliances those related to cut the power so suitable striking gear and the kind of switch or other related to proper provision it should be provide in the inside the factory so that at the time of emergency at the time of important things so we have to cut the power every area रे हमें ताको देखिबा so that we have to cut the power quickly so that the any person they will not face any kind of problem clear then asla तमरा self acting माने कोन कहला ऑटोमेटिकली स्टार्ट होतबो सेल्फ एक्टिंग पर तमे स्विच ऑन कर देथिबो ताको टाइम फिक्स कर देबो से ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग से तार काम चलै बुझिला सो हमर एसी रे आबे कोन करछे गोटे टाइम माने गोटे ईयर दे दोचे कोन कहले टेंपरेचर रे हम रखे 28 टाइम रखि देले हम ताको बारंबार ऑफ ऑन करियो पड़छि से ऑटोमेटिकली ऑन होछि ऑटोमेटिकली ऑफ होछि मान तमो रूम टेंपरेचर वाइज से तमो कोन करछि कूलिंग फैसिलिटी सप्लाई करछि सेमिति दोज आर द सेल्फ एक्टिंग मशीनरी ऑटोमेटिकली स्टार्ट होछि नो वर्कर आर अलाउड इन दैट पर्टिकुलर प्लेस no worker tame कहबो कि मैम केही तो जीवनी सेठी काम केमति होबो yes the worker will allow in that particular place that the factory the inspector assign the person in that particular place jaha ko assign kara jaitibo those persons are assigned in that particular place only that person is allowed that person can be allowed in that particular place other persons are strictly prohibited clear casting a new machinery casting माने कोन करिबा casting माने कोन कहला installation कहार new machinery जते हम new machinery factory को किछ आसिला we will install the new machinery what we will do there so we have to देखो एटी केते बड़ बड़ machine देखो लागी छि factories हला ए सब को हम install करिबा ए सब जगह रे हम काम करिबा imagine करछो तो कोन छोटो छोटो हम घर रहिची ए जो माने मशीनरी माने ए जो स्विंग मशीन हिची ए सब मशीनरी के इंस्टॉल करा जी ए सब मशीनरी फैंसिंग मशीनरी ए सब को टाइम टू टाइम चेक करा जी राइट सो दोज आर द
new machinery inside the factory, casting the new machinery, the expert, they have to check the knot, bolt, set the screw, all the other essential utensils. They have to, means what? Fence properly, they have to install properly, and they have to also check time to time. Right? Prohibition of employment. Kon kahila? Next, prohibition of employment of women and children near cotton openers. Eta dekho. Eta kon kahila ko kon kha jauchi? E dita ko cotton openers. Mane kon kahila? Cotton pressing hotubo jota ki seta pray open area am dithibo. Where the cotton pressing bahut sare jinsa side sabu semane kamo kara jauthi. So those are the cotton openers area. So nobody, neither the woman nor the child, they are allowed in that particular place. Clear? Then asla hoist and lifts. Hoist, lift and machines and other things that is there in the section 28 and 29. It means what? Hoist means kona? Hoist means we can carry the goods. Jinso notuba. Lift means where the person can move in the lift. So hoist re goods jiba and lift re kon habo loko jibe. So the hoist, lifts and other things, it must be checked time to time. Kon ame tar check kariba? Rope, belt, all the other utensils related to the hoist and lift. The factory, the officers, the persons, they have to check, the experts have to check time to time. So that dhara gote jinso jauchi ame dekhutubo TV manankore loko mane jauchanti kouthire kahilla boda boda lift amor te lift no se सब open lift thibo jauthibe kon habo ye rope ta कटि jibo नहले हमर से जो कोन कहला बेल्ट किछि थिबो कटि जिवो से धासिगिरी 20 25 फ्लोर पूरा तळको पडिबो काम करचंती लोक माने बिल्डिंग काम करचंती बिल्डिंग काम रे कोन करचंती हां ते सब काम रे से माने होस्ट और लिफ्ट से माने को दिया जाय सो से ताको पूरा टाइम टू टाइम हम चेक करबा so that neither the any kind of goods nor the any kind of person they will face the problem, right? Then asla tamar kono revolving machinery mane kono revolving machinery just example of the grinder amar grinder ta jemiti buluni jo speed re revolving machinery say speed re say force re bulibo, right? So revolving machinery means those are the revolving machinery. So भाबो ग्राइंडर को रेट रे छोटियाटी माने को रेट रे डेंजर से जदी हमर टिके एपर सेपट हे गला माने कोन हबो सिचुएशन इमेजिन कर सो ये तो रिवॉल्विंग मशीनरी कितने बड़ा बड़ा एरिया है कितने बड़ा बड़ा जिंस है कितने स्पीड रे बुलुतबो ता भितरे जदी किछि भी हाथ गोडा पसी गला से पूरा तार चिन्ह भी मिलिबनी बुझिलो ना सो कोन करा जिवो एठी सो बेसिकली दोस आर द रिवॉल्विंग मशीनरी the factory have to give notice to the person before assign the work in that particular area. The factory have to give the notice to the particular person. So basing on the guidance, basing on the experienced person, basing on the basically trained person, they can work in that particular area. Notice the bo ta purboru jota ki means particularly ko loko ko area re kamo karibe, and apart from this those are the trained person, expert, those are the basically adult person, they can work in that particular area so that any kind of problem and any kind of means what any kind of danger, any kind of problem should not be there, right? Pressure plant section 31 pressure plant mane kono the pressure plant means dhara amuku amaro means what मु एग्जांपल देइथिले कोन ना किचन आउ रूम भितरे हमर टेम्परेचर होची डेफिनेटली डिफरेंट हैला सेमिति नॉर्मल रूम और प्रेशर प्लांट भितरे टेम्परेचर होची बहुत डिफरेंट means pressure plant is the area it is generally more than the normal temperature जदि हम नॉर्मल टेम्परेचर ता 20 थिबो प्रेशर प्लांट ता जस्ट डबल थिबो 40 50 एमटी थिबो प्रेशर प्लांट, right? So the pressure plant means that is very hot temperature, hot area, so we have to provide effective arrangement amu ki the factory the obviously
So the factory have to provide effective arrangement nearest in the pressure plant area so that the worker can work safely. Safely semane kon dabo? Obviously cooling facility dabo, right? So जो hot temperature जो माने काम करछन्ती से एरिया रे से माननको cooling facility दबो so that से माने कोनोसी problem face करिवे नाही. Clear? Then चली जा कोठी floor, stairs and means or access. Floor, staircases, section 32 said floor, corridor, staircase and other area every day we have to clean through sweeping and mopping. जिनस धरिकी जाउची तेल ऑयल पड़ीची कौन हैला गोड़ खसी गला पूरा पूरा वर्कर पूरा पड़ी गला तो कौन हबो केते जे माने इधर फ्रैक्चर हबो मुंड को बाडी जीवो कौन कौन बहुत सारा जिनस होई परबो हम चिंता करि पारि हैला सो कौन हबो सेठी पूरा सेठी रु आसी तळे पड़ला सो कौन एवरी डे वी हैव टू मेंटेन clean through sweeping mopping so that the any kind of accident any kind of problem should not be happen. Pit sumps, opening in floors and others. आ माने कौन सम्प पानी टंकी देखिच ताको कौन कह जाउची सम्प्स कहूचे पिट्स हैला छोट खणा छोट खात बड़ खाल छोट खाल बड़ खाल और ओपन माने ए जो तमर कहलो पास पानी टंकी हां ए सब फ्लोर रे थिबो माने तळ थिबो ए सब को हमें कोन करबा क्लोज करबा. इट मींस व्हाट all the pits sumps पानी टांकी जो खाल खणा मन रखिबो हैला देखिथिबो गोटे फिल्म देइथिला कोन कहलो गोटे झियो को नेकी जोटा की गोटे बहुत तळ जाई की गोटे गवर्नमेंट करथिला कोन सेडी गोटे माने खाल करथिला से भीतर जाई की पसी गला गोटे फिल्म देइछि गोटे फिल्म हेछि सेतिरे हां ताको काडिया पाई कहि की केते जे माने लागला से एंटायर स्टार्टिंग रु एंडिंग ताको बाहर करिया पाई हैला एंटायर फिल्म ता सेति रहिछि. सो इमेजिन कर तळ हमर माने तळे पानी टैंक हेतिबो बंद करा हि नथिबो गले वर्कर माने रात्रि रे अननोनली जाई के से भीतर पसी गले आ बंचिबो से. सो कोन करा जिवो फैक्ट्री कहिला इट मे बी स्मॉल पिट्स large pits sumps those are there in the means what in the ground floor or it may be the top floor wherever is the things are there. So we have to close properly so that the worker the other person they will not face any kind of problem, right? That is the pit sumps, right? Excessive weight माने कौन ओजन ठीक है. No person those persons are working over the factory or a person or it may be the lift or it may be the hoist लोको हो hoist हो कि lift हो all those things as much as means suppose a person can carry only 5 kg or 10 kg or 15 kg. Suppose a person can carry 5 kg we will give 20 kg कौन हबो पड़ जिवो लिफ्ट रे 5 जन जिबार थियो तमे खेंची के 20 जन पसिबो कोन हबो लिफ्ट भांगी जिवो को होस्ट रे 50 केजी जिबार थियो ताको तमे 100 केजी पुरेबो. ए जो डंगा देखुचो हमर जाउची कोडी कहला काली जाई रे 10 जन रे कैपेसिटी थाउची ताको 25 जन बसौची कोन होची डंगा उल्टी पड़ची. सब क्षेत्र रे जेतिकी तम कैपेसिटी हमें सेतिकी जेतिकी खाइबा कैपेसिटी सेतिकी खाइबा अधिक खाइले कोन हबो वोमिटिंग हबो सेही क्षेत्र सेहीटा हला बुझिलो ना. सो कौन कहूची excessive weight means it may be the person it may be the hoist it may be the lift. So we have to provide as much as not more than that, right? Precaution in case of ice ठीक है or dangerous fumes gas all those things those ए देखो protection of ice I को protect करजे सुधर देखो protection देजे काहे की ना those persons are working nearest the fire if we will not protect the person then it may be chance to due to the small things the eye may be damage of the means the eye it may be effect or it may be something will happen in that particular person. So that every factory
they have to provide proper facility so that the people they can work properly in front of fire and in front of dangerous area, right? Those people are working dangerous fumes and gas. मने अछि ना हमरो भोपाल ट्रेजेडी, हाँ, जो गैस लीक कला को जुगरे लीक करथिले आज पर्यंत सेठी माने फिजिकली चैलेंज मींस विकलांग लोक जन्म होजन आज पर्यंत सेठी कोनोसी जिंस सेठी होउनी, हाँ, लोक जोडी थिले सेठी चटाचट कि पूरा माने समस्त को डेथ हे गला। भोपाल ट्रेजेडी इट इज अ लाइफ एग्जांपल, इमेजिन करो। सो भोपाल ट्रेजेडी तो माने आमे सुनिचे आज का डेट रे देखुछ माने डेली तमे देखिबो जो लोक माने गैस पाखरे काम करचंती, फ्यूम्स पाखरे काम करचंती, गैस लीक हे जाउची हां सब एरिया रे एते जन माने आमे कहबा एनटीपीसी ओएनजीसी ए सब एरिया रे मध्य गैस लीक होउची। सो दैट केते केते से माने प्रॉब्लम फेस करचन। सो आमे कोन करिबा? सो बेसिकली सो those people are a protection of eyes, or it may be the people who are nearest dangerous gas fumes, so that we have to provide the proper facility so that the people that should not face any kind of problem. ठीक है? Then asila kono na tomoro explosive or inflammable dust and gas mane rakhibo। For example tomoro jo जाउची जो हमरो कोन कहला पेट्रोल रो सब टैंक जाउची पेट्रोल माने कोन कहला टैंकी को बड़ बड़ सब हमर माने कोन गाड़ी जाउची हैला ट्रक रे जाई थाउची देखिबो त पछरे लेखा आइतिबो गोटे डेंजर एमति चिन्ह रखा आइतिबो से पछरे लेखा आइतिबो एक्सप्लोसिव एंड इन्फ्लेमेबल त माने कोन कहला वेरी डेंजरियस। तमे ताकू जदी टिके भी किछि हे गला से पूरा माने पूरा गोटे जदी तमरो सेटा ब्रस्ट कला हमर पूरा एंटायर भुवनेश्वर को अधा ताकू ध्वंस कर दो। जदी गैस सिलिंडरटा गोटे घर ध्वंस कर दोची तो भाबो गोटे टंकी पेट्रोल रो टिके जदी किछि हे गला से पूरा लेखा आइतो एक्सप्लोसिव एंड इन्फ्लेमेबल मींस हाईली सेंसिटिव हाईली डेंजरियस। गोटे जदी से गाटे पड़ी गला न्यूज रे देखुथबो एई मझिरे एई ना किछि दिन तळे से कलाहांडी कोडी गोटे ये हे गला से एंटायर एरिया रे इलेक्ट्रिसिटी कटा है से जो पर्यंत सेटा को माने पूरा सिक्योरली ये करा है नि से एंटायर एरिया रे जिबा आसीबा कारण लोक जति जाउचंती भी बाइक रे तारो भी सेटा जाय कि सेटी इफेक्ट कर देबो से लीक को जानछ ना हाईली अफेक्टेड। सो एई एरिया को हमें प्रॉपर सेफ्टी दबा। दोस पीपल आर वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया पेट्रोल गैस इन दिस एरिया दोस आर हाईली एक्सप्लोसिव एंड इन्फ्लेमेबल वी हैव टू गिव द प्रॉपर प्रोटेक्शन। ठीक है? देन आसला कोन ना प्रिकॉशन इन केस ऑफ फायर। मझिरे न्यूज रे देखिचो सम हॉस्पिटल हां निया लागी गला कोठी आईसीयू रूम रे आईसीयू रे वेंटिलेटर रे कोन अवस्था हितिला तमे निजे जानिचो मोर एठी कहबा दरकार नै दैट इज द एग्जांपल ऑफ प्रिकॉशन ऑफ द फायर। ता पर टू गवर्नमेंट कोन कला ता पूर्वरु भी रखिथिला केही मानु नांती कोन करा जिवो ता परे भी गोता परे गवर्नमेंट कोन कला सब जगह रे सब एरिया रे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रे मध्य फायर तमे नेकी तमरे ये सब इंस्टॉल करी। इट मींस व्हाट? सो प्रिकॉशन ऑफ फायर इट मींस वी हैव टू मींस सपोज हमें कहबा कि तमे जतले हमर फ्लाइट रे जाउचे देखिबो गोटे डोर थिबो किछि इमरजेंसी ले से डोर बटे तमे कोन करिवो डेई पडिबो पूरा ऊपर जा कथा तळु को पळेबो जुआडे हेले गोटे जीव से कहूची से बकवास कथा हैला। सो अल्टीमेटली सो पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर थिंग्स मस्ट बी देयर। प्रिकॉशन ऑफ फायर मींस व्हाट? सो एनी काइंड ऑफ मींस फायर एनी काइंड ऑफ means these things can be happen in the factory so that the proper instrument should be there in the factory so that we have to take the correct step and we have to this kind of situation should not be happen hela correctly timely am step number jota ki the timely step nei thanta some hospital jota ki amre etiki problem hei no thanta hela। then asla kona specification of defective part of the factory। defective part गोटे बिल्डिंग कोन हेची डिफेक्ट हेक अछि ता भितरे काम करचंती हमरो भूषण स्टील एई बंध हबा को जाउची ताकू किए गोटे एक्वायर कला किए गोटे को गोटे टाटा की किए गोटे एक्वायर कला भूषण को बोधे हैला मो जति के बने पड़ची भूषण स्टील रो डिफेक्टिव गोटे बिल्डिंग थिला ताकू ये हेगला से भितरे सब लोक चापी हेकी सफा हेगला बुझिलो ना।
So identify defective part over the factory. It means if any defective building, defective part, any kind of defective things is there, so that we have to identify that, and no worker will work in that particular area. ये जो वर्षा झड़ी रे देखुछ लोक मान को बाहर करा जाउछ, रेस्क्यू करा जाउछ, काहे ना से सब होछ डिफेक्टिव, बुझुछो ना, कांथ पड़ी गला, ये पड़ी गला, वो पड़ी गला. देन आसला कोन, सेफ्टी बिल्डिंग एंड मशीनरी. हमें बिल्डिंग को भी सेफ्टी रखिबा, वी हैव टू सेव द बिल्डिंग, वी हैव टू सेव द मशीनरी, एवरीथिंग वी हैव टू सेव, so that the worker they will not face any kind of accident, any kind of problem inside the factory. Then safety officer, section B, section 40B, safety officer. कौन कोची safety officer? See, if in a factory, गोटे factory रे more than केते लोक काम करथिबे ना, if in a factory more than 1000 workers are working, केते लोक 1000 मन रखिबो. If in a factory more than 1000 workers are working, then the factory have to appoint one safety officer, right? जदि 1000 रे गोटे safety officer आमे appoint करिबा, then more than 1000 रे जदि 1000 or more than 1000 the factory have to appoint one safety officer. तार पूरा calculation अछि. 1000 to 2000 भितरे गोटे, 2000 to 5000 भितरे आ गोटे, 5000 to 10000 भितरे आ गोटे, एम्ति करिकि तार पूरा calculation अछि. ता माने 1000 रे गोटे माने कोन 10000 लोक काम करथिले गोटे safety officer? No. So basing on this the calculation is there. So basing on this the factory have to appoint a safety officer, but minimum 1000 worker. तमे ना क्वेश्चन करबा मैम, जदि 1000 रे जदि आमे safety officer appoint करबा, less than 1000 अछन आमे safety officer appoint करबानी ना, करबानी कुआडे करबा, लेखा आइछि कि करबानी. अच्छा सेठी किए सब बुझिबो, जदि less than 1000 workers are working under the factory, then the factory will not appoint a safety officer. Now who will take care section 41 to section 21 to section 41, all those things? काम कोन safety officer 21 to 41 को सब बुझिबो, ता काम के बुझिबो, एठी बुझिबो occupier or the appointed person. जदि किछि प्रॉब्लम होला रेस्पोंसिबल कार, occupier रा, appointed person रा, जिसे एरिया को बुझुतुला. बट जदि सेफ्टी ऑफिसर अछि किछि प्रॉब्लम होला रेस्पोंसिबिलिटी कार, सेफ्टी ऑफिसर रा. बुझिलो ना? So less than 1000 the factory will not appoint safety officer. More than 1000 one safety officer must be there, and the calculation is there. Suppose 2000, 4000, 10000, how many safety officer will appoint the factory, right? Then asila kono power to make rules. So amara factory को के rule करछि? State government. Now who is controlling the factory? The state government is controlling the factory. The state government is the controlling authority over the factory. Any kind of change, any kind of safety related किछि भी change हबो, के control करिवो? State government करिवो. बुझिलो ना? So this is all about your safety facility chapter. केते कहले ना 4. बुझिगलो? Yes. Do you any doubt? कौन क्वेश्चन पचारिबो कहजो? कौन कहला? Mute yourself. अच्छा अच्छा हां. हैला, अरे बुझिगलो रिसेंटली गैस लीकेज इन वाइजाग. हां, जहा कहिलो रे मा, जहा कहिलो रे बापा. हां, डेली न्यूज़ रे देखिबो. कोडी नै कोडी गैस हैला, कोडी नै कोन कोन ये हैला जा सिचुएशन. एनीवे, अरे कहिलो रे, बुझिलो ना नै बाबू माने, पिल्ला माने? Yes or no? Chapter 4 safety facility. Yes ma'am. Yes ma'am. आज तुमको ओपन कराई जायछि कि? हां? अरे पिला पिला माने आज तुमको दिया है टू वे कम्युनिकेट करिया पे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes ma'am. अरे वाह. ओ टू वे कम्युनिकेट करिया दिया हला? So nice. Very good. जेतेले क्वेश्चन दरकार सुनो दया करिवो, वेरी गुड, बढ़िया डिसिप्लिन भाबरे क्लास टा कलो, माने ऑनलाइन माने ओपन कराई छै स्टिल बहुत डिसिप्लिन भाबरे क्लास टा कलो, वेरी गुड, थैंक यू सो मच. हैला, किए गोटे मझरे खाली ठुक ठाक करथला, दया करी
करबनी कारण मु देखि पारनी बढ़िया वेरी गुड एमती दियंतु माने हमर कोन दीपक सर तुमको एमती दउथंतु टू वे कम्युनिकेशन हैला बढ़िया जदि इनडिसिप्लिन करिवो ताले म्यूट करिवो